Hi, good morning, everybody. Welcome to the session. The Supreme Court of India has recently come out with a new judgment in the cases of divorce. A bench of 5 judges has recently given a new ruling saying that it can exercise its plenary power and can do complete justice. Under Article 142, subsection 1 of the Constitution of India, and can dissolve a marriage on the ground that the marriage has irretrievably broken down without referring the parties to a family court where the parties had to wait for a period of 6 to 18 months before getting a decree of divorce. Yes, this is the new ruling of the Supreme Court. So in one line, I could say that the Supreme Court said that now you are not required to wait for that 6-month waiting period in order to get a decree of divorce. Under Article 142, subsection 1, that can be served, decree of divorce can be served. यदि हस्बैंड और वाइफ में से कोई एक व्यक्ति कहता है कि नहीं, मेरे को शादी मेंटेन करके रखना है लेकिन मुझे कुछ साथ में देना है, मुझे डिवोर्स नहीं देना है, तो भी सुप्रीम कोर्ट इस पावर को यूज कर सकता है अंडर आर्टिकल 142 सबसेक्शन 1 एंड अ डिक्री ऑफ डिवोर्स कैन बी गिवन टू दी पार्टीज. अब थोड़ा सा समझते हैं कि हमारे पास प्रोविजंस लॉ के अंदर क्या प्रोविजंस है डिवोर्स के. नाउ अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 हमारे पास डिवोर्स का प्रोविजन है बाय म्यूचुअल कंसेंट. दैट मीन्स द पार्टीज कैन अप्लाई द पिटिशन ऑफ डिवोर्स इन द कोर्ट बाय म्यूचुअल कंसेंट. They have to together file a petition in the court that कि हमको divorce चाहिए, and they have to maintain certain conditions in the court. That means there are certain things if provided to the court, then a decree of divorce can be given to the parties. Number one, the parties have to make this clear to the court that we are living separately. हम एक साथ नहीं रह रहे at least for a period of 1 year. यदि दो parties एक साल या एक साल से ज़्यादा टाइम से एक साथ नहीं रह रहे, then they can file a case of divorce in the court. They have to also ensure to the court that they are not going to live together any further and they are doing this by mutual consent. देखो भाई, शादी के ना तुरंत बाद डिवोर्स नहीं होता है. मतलब हमारे जो प्रोविजंस है लॉ के अंदर वो ये कहता है कि भाई एक साल के बाद आप यदि आपको लगता है कि भाई आपको डिवोर्स चाहिए और आप एक साल और यदि सेपरेट रह रहे हो, देन इन दैट केस यू कैन फाइल ए केस ऑफ डिवोर्स इन द कोर्ट. ठीक है. तो जैसे ही आपका पिटिशन फाइल होता है, एक साथ जब आप पिटिशन फाइल करते हो, then you have to wait for a minimum of 6-month period. That means you have to make a second move in the court with respect to the petition that you already have filed in the court. और ये जो सेकंड मूव लेते हो, ये सेकंड मूव पहले पिटिशन के 6 महीने के बाद से आप लेना शुरू कर सकते हो. दैट मीन्स यू हैव टू वेट फॉर ए मिनिमम ऑफ 6-month पीरियड. ओके, एंड टिल इट कैन बी एक्सटेंडेड टू 18 months. So from the petition you have to wait for 6 months and then after 6 months, okay, this gap can be extended to 18 months. Within that period, you have to make a second move to the court and you have to ensure the court कि भाई हमने सब सोच लिया है, हमने सब समझ लिया है, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं बन रहा, हमको तो डिवोर्स ही चाहिए. कोर्ट यही सोच के आपको 6 month का वेटिंग पीरियड देती है कि हो सकता है कि यू कैन गेट बैक टू द मैरिज अगेन. हो सकता है कि आपके बीच का जो डिस्प्यूट है इट गेट डिजॉल्व्ड, वो खत्म हो गया है. नाउ यू वुड लाइक टू रियूनाइट एज ए फैमिली. सो देयरफॉर दैट 6 month वेटिंग पीरियड इज गिवन बाय द कोर्ट टू द पार्टीज. 6 महीने के बाद यदि कोर्ट में आप जाते हो और आप कहते हो कि नहीं भैया हमने सब कुछ करके देख लिया है, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है, वी आर नॉट रेडी, वी कैन नॉट लिव टुगेदर, वी हैव ऑल डिसाइडेड, नाउ वी वांट डिवोर्स अल्टीमेटली, उस समय डिक्री ऑफ डिवोर्स दिया जाता है. यदि आप ये सोच रहे हो कि सर इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट समबडी गॉट मैरिड एंड नाउ इमीडिएटली ही वांट्स और शी वांट्स अ डिवोर्स, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है. अंडर सेक्शन 14 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 वो ये कहता है इफ द पिटिशनर इज अंडर एक्सेप्शनल hardship or if the respondent is under exceptional depravity, तो वो जो आकर कोर्ट में कह सकते हैं भाई शादी का कोई मतलब नहीं, आप तो हमें अभी से डिवोर्स दे दो. देयर इज नो पॉइंट दैट वी शुड वेट फॉर दैट 6 month ऑफ मैंडेटरी पीरियड. तो ये एक एक्सेप्शनल केस हो गया. बाकी जो नॉर्मल केसेस है, इन ऑल सच नॉर्मल केसेस द पार्टीज हैव टू वेट फॉर ए पीरियड ऑफ 6 month बिफोर फाइलिंग फॉर द सेकेंड मोशन एंड टू इंश्योर द कोर्ट कि भाई हमने सब करके देख लिया, नाउ वी वांट डिवोर्स. 2021 में एक रूलिंग आई थी अमित कुमार वर्सेस सुमन बेनीवाल. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था दैट ए 6 month वेटिंग पीरियड इज रिक्वायर्ड टू बी सर्व्ड बाय द पार्टीज एंड इट हैज टू बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट. सो देयरफॉर इन ऑल द नॉर्मल केसेस व्हेन द पार्टीज आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट ए डिक्री ऑफ डिवोर्स, तो उनको वो 6 महीने का वेटिंग पीरियड, कूलिंग पीरियड सब करना पड़ता है. अब वो 6 महीने का वेटिंग पीरियड सब करने के बाद व्हेन यू अगेन मूव टू द कोर्ट और कोर्ट को लगता है कि भाई देयर इज नो वे अहेड, वी कैन नॉट रिजॉल्व दैट मैटर, अब इनको अलग ही करना पड़ेगा, दैट इज द ओनली वे, तभी डिक्री ऑफ डिवोर्स मिलता है आपको. ठीक है ना. दिस वाज द प्रोविजंस दैट वी हैव.
और आर्टिकल 142 सबसेक्शन 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है? ये कहता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी पर्टिकुलर केस में जस्टिस नहीं हो पा रहा है, a justice is required to be done, and for that we need to come out with a decree or an order, then that decree or order is going to be enforced throughout the territory of the country. Basically एक केस फाइल हुआ था 2014 में, and the parties were seeking to get a divorce under article 142 subsection 1 of the constitution of India, और वो लंबा चलता चला रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आर्टिकल 142 सबसेक्शन 1 का मकसद यही है, ऑब्जेक्टिव ही यही है, and its real objective is to do complete justice in a case where you feel that justice is not provided. So therefore if the case is coming since 2014, ये इतना लंबा क्यों आ रहा है? It is a case of decree of divorce, इतना लंबा क्यों चला रहा है? तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, डिक्री ऑफ डिवोर्स का भी केस है, तो भी हम आर्टिकल 142 सबसेक्शन 1 को यूज करके डिक्री ऑफ डिवोर्स इमीडिएटली दे सकते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि भाई यहां पर जस्टिस ही नहीं हो पा रहा है। Now, if you ask me, sir, what are the powers that are conferred under Article 142 subsection 1 of the Constitution of India, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा that Article 142 has sweeping powers. In fact, the Supreme Court has expressed those powers from time to time in its judgment, representing its scope and extent. In fact, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 सबसेक्शन 1 को इन्वोक करके कंप्लीट जस्टिस दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके पास इतनी ताकत है, इस आर्टिकल के पास इतनी ताकत है, दैट टू डू कंप्लीट जस्टिस वी कैन यूटिलाइज इट, प्रोवाइडेड दैट एनी ऑफ द ऑर्डर और द जजमेंट्स और द डिक्री गिवन अंडर आर्टिकल 142 सबसेक्शन 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द डिक्री शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट with the present statutory substantive laws. It should not be consistent with the ideas or the concept and the principles defined under the Constitution of India with respect to fundamental rights, principle of secularism, principle of federalism, etc. तो यदि ये सारी चीजें फुलफिल होती है, then under public policy, Article 142 subsection 1 can be utilized by the court and can give a complete justice. अब समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा कि हम किसी भी मैरिज को डिसॉल्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट द मैरिज हैज इररिट्राइवेबली ब्रोकन डाउन। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है कि भाई वो शादी इतनी बिगड़ चुकी है that there is no emotion in that marriage, it has emotionally broken down beyond salvation, the marriage is not at all working and it will not work any further, so there is no way ahead with that marriage. The only way ahead is to dissolve that marriage and get those people separated so that they can have their life. That is the way ahead. So the Supreme Court has came out with certain sort of factors. Supreme Court has come out with certain sort of factors, and they said that these all factors, if given in the court of law, then Article 142 subsection 1 can be utilized by the court. What are those factors? Number one, the court said, Supreme Court said that we need to ensure as to for how long these parties who are seeking for divorce have actually cohabited in the relationship of marriage. After that we are going to decide. Also, we also need to know when the last time the parties had cohabited together. We also need to know the allegations that the parties are making towards each other and to all the family members of the parties. The different provisions of law or the judgments which the court has given from time to time, and what are the implications of those judgments in the personal relationships of the people who are seeking divorce in the court. Also, whether the parties ever knocked the doors of the court in order to resolve their disputes through mediation or through the help of the court. Also, the courts need to know for how many times the parties have knocked the doors of the court in order to resolve their disputes, either by taking the help of the court or by taking the help of the mediation. After all these questions being answered, and we come to an understanding that okay, the marriage has irretrievably broken down, by इतना कुछ हो गया, अब तो marriage को restore नहीं कर सकते, so therefore we need to go for a complete justice. And somebody who is fighting for a decree of divorce for the last 6 years is a good enough time to decide that now a complete justice is required to be done under this particular case. So the Supreme Court said that in all such cases, now we can go for a complete decree of divorce.
So this is what the condition is. So finally the Supreme Court says that if we come out with all such informations by the parties and we can decide that Article 142 can be utilized under Section 1 of the Article 142, we can grant a decree of divorce to the parties. So this is the recent judgment given by the Supreme Court of India. Now to all such students who are looking forward to prepare for CLAT 2024 and 25, there are two different courses which are given, which are recommended to the students who are right now working with their 11th and 12th board exams. Because when you are in the board exams like 12th standard, you feel like putting all your efforts into your preparations of 12th board. So for all such students, there are two different courses. One is called as weekend courses and one is called a regular program which has 5 days working and 1 day test. The weekend course will go 2 days, Saturday and Sunday, double classes on Saturday and double classes on Sunday. And along with that, there is a test paper to be done by all such students. So these two models of preparations are in the online mode, and all such students who are looking forward to stay at their home at their comfort level and would like to prepare for the exam, you are welcome to do that. So to know all about such courses, please call us at 9329620356. And the last, the students looking forward to write a well-planned mock test papers, you can still call us to get such mock test papers. Thank you so much. May God bless you. Bye-bye.